दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं होती, वे जिंदगी में पीछे क्यों रह जाते हैं? आपने अपने स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो बहुत होशियार थे, बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन आज वे कुछ खास नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल साधारण दिखते हैं, जिनके पास कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं होता, लेकिन वे अपनी मेहनत और लगन से आसमान छू लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या सफलता सिर्फ किस्मत या टैलेंट का खेल है? अगर ऐसा होता तो हर टैलेंटेड इंसान आज सफल होता और हर साधारण इंसान संघर्ष कर रहा होता। लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं होता है। इस सवाल का जवाब बहुत गहरा है और यह हमारी सोच से जुड़ा हुआ है। यह जवाब इस बात में छिपा है कि हम मुश्किलों को कैसे देखते हैं। जब हमारे सामने कोई चैलेंज आता है तो हमारा दिमाग हमें क्या कहता है? क्या वह कहता है ये मेरे बस का नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता? या वह कहता है चलो कोशिश करते हैं, शायद मैं इससे कुछ नया सीख जाऊं? यही छोटा सा फर्क एक इंसान को सफल और दूसरे को असफल बना देता है। ये कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की एक आवाज है, हमारी अपनी सोच है। यही सोच तय करती है कि हम हार को अंत मान लेते हैं या उसे एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं। आप में से कई लोग ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पर 3D एनिमेशन सीखना चाहते होंगे। शुरुआत में जब आप सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो हजारों बटन और ऑप्शन देखकर डर लगता है। एक आवाज अंदर से आती है, ये बहुत मुश्किल है, ये तो वही लोग कर सकते हैं जिनका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो। यह सोच आपको वहीं रोक देती है। लेकिन एक दूसरी सोच भी है जो कहती है, हाँ यह मुश्किल है, लेकिन अगर मैं रोज 1 घंटा भी इसे सीखने में लगाऊं तो धीरे धीरे सीख जाऊंगा। आज जो बड़े बड़े एनिमेटर हैं, वे भी कभी इसी शुरुआती डर से गुजरे थे। उन्होंने हार नहीं मानी, बस सीखते रहे। उनकी सफलता का राज उनका टैलेंट नहीं, बल्कि उनकी यह सीखने वाली सोच थी। तो सफलता का असली राज हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी क्षमताओं के बारे में क्या सोचते हैं। क्या हम मानते हैं कि हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता, या हम यह मानते हैं कि हम मेहनत और सही दिशा में कोशिश करके खुद को बदल सकते हैं और कुछ भी सीख सकते हैं। इसी सोच को माइंडसेट कहते हैं और यही वह चाबी है जो सफलता के हर ताले को खोल सकती है। आसान है, बस हमें इस चाबी को समझना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। तो यह माइंडसेट आखिर है क्या? जानी मानी साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने सालों की रिसर्च के बाद बताया कि इंसानों में मुख्य रूप से 2 तरह की सोच या माइंडसेट होते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। ये दोनों सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और हमारी पूरी जिंदगी को अलग अलग दिशाओं में ले जाती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी बुद्धि, उनका टैलेंट और उनकी काबिलियत जन्म से तय होती है और उसे बदला नहीं जा सकता। वे सोचते हैं कि या तो आप किसी काम में अच्छे हैं या नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे किसी काम में फेल हो गए तो सब यही सोचेंगे कि वे बेवकूफ हैं या टैलेंटेड नहीं हैं। इसलिए वे चुनौतियां लेने से डरते हैं। वे वही काम करना पसंद करते हैं जिसमें वे पहले से ही अच्छे हों, ताकि उनकी इमेज बनी रहे। जब उन्हें कोई मुश्किल काम मिलता है तो वे घबरा जाते हैं और कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी काम के लिए मेहनत करनी पडी डा डी डी डा डी एच रही है तो इसका मतलब है कि उनके अंदर उस काम को करने का टैलेंट ही नहीं है। वे दूसरों की सफलता से जलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे उनसे बेहतर हैं। इसके बिल्कुल विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं। वे मानते हैं कि उनकी बुद्धि और काबिलियत को मेहनत, लगन और सीखने की चाह से बढ़ाया जा सकता है। वे यह नहीं सोचते कि वे जन्म से ही किसी चीज में एक्सपर्ट हैं। वे मानते हैं कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जिसे आप जितना इस्तेमाल करेंगे वह उतना ही मजबूत होगा। उनके लिए कोई भी काम मुश्किल या आसान नहीं होता, बल्कि हर काम सीखने का एक नया मौका होता है। वे चुनौतियों को देखकर घबराते नहीं, बल्कि उत्साहित होते हैं। उन्हें लगता है कि मुश्किल काम करने से ही उनका दिमाग तेज होगा और वे कुछ नया सीखेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग गलतियों से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। जब वे फेल होते हैं तो वे खुद को हारा हुआ या बेवकूफ नहीं समझते। वे सोचते हैं, इस बार मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन मैंने यह सीखा कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। अगली बार मैं कुछ और ट्राई करूंगा। वे दूसरों की सफलता से जलते नहीं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेते हैं। वे सोचते हैं,
अगर यह इंसान मेहनत करके यहां तक पहुंच सकता है तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता। यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। आसान है, बस हमें इन दोनों में से एक को चुनना है। चलिए इन दोनों माइंडसेट के फर्क को और आसान शब्दों में समझते हैं, जैसे हम किसी बच्चे को समझा रहे हों। कल्पना कीजिए कि दो बच्चे हैं, एक का नाम है रोहन और दूसरे का नाम है साहिल। दोनों को एक मुश्किल मैथ की पजल दी जाती है। रोहन पजल को देखता है और सोचता है, अरे वाह, ये तो बहुत मुश्किल लग रही है। अगर मैंने इसे सॉल्व नहीं किया तो सब मुझे बुद्धू समझेंगे। इससे अच्छा है कि मैं कह दूं कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। रोहन कोशिश करने से भी डरता है क्योंकि उसे अपनी स्मार्ट होने की इमेज खोने का डर है। वह अपनी काबिलियत को एक ट्रॉफी की तरह देखता है जिस पर वह कोई दाग नहीं लगने देना चाहता। वहीं दूसरी तरफ साहिल उसी पजल को देखता है और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वह सोचता है, वाह, ये तो मजेदार लग रहा है। ये मुश्किल है, इसका मतलब है कि इसे सॉल्व करने में मेरा दिमाग लगेगा और मैं कुछ नया सीखूंगा। साहिल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पहली बार में सफल होगा या नहीं। उसके लिए सबसे जरूरी है कोशिश करना और उस प्रोसेस को एंजॉय करना। वह गलती करता है, फिर से कोशिश करता है और हर गलती से कुछ सीखता है। उसके लिए यह पजल अपनी इमेज बचाने का नहीं, बल्कि अपने दिमाग को तेज करने का एक मौका है। वह अपनी काबिलियत को एक पौधे की तरह देखता है जिसे वह मेहनत और लगन से बड़ा कर सकता है। अब सोचिए कि कोई ब्लेंडर सॉफ्टवेयर सीखने की कोशिश कर रहा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान रोहन की तरह एक मुश्किल ट्यूटोरियल देखेगा और जब उसका 3D मॉडल वैसा नहीं बनेगा जैसा वीडियो में दिख रहा है तो वह निराश हो जाएगा। वह सोचेगा, मुझ में आर्टिस्ट वाला टैलेंट ही नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। वह सॉफ्टवेयर बंद कर देगा और शायद दोबारा कभी नहीं खोलेगा। वह अपनी पहली असफलता को फाइनल मान लेगा। उसके लिए यह एक सबूत है कि वह इस काम के लिए नहीं बना है। वह अपनी कमी को स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि सॉफ्टवेयर या ट्यूटोरियल को दोष देगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान साहिल की तरह जब पहली बार में अच्छा मॉडल नहीं बना पाएगा तो वह निराश नहीं होगा। वह सोचेगा, ठीक है, पहली कोशिश ऐसी ही होती है। मेरा मॉडल अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने यह तो सीखा कि यह टूल कैसे काम करता है। चलो वीडियो को फिर से देखते हैं और समझते हैं कि मैंने कहां गलती की। वह अपनी गलती को एक फीडबैक की तरह देखेगा, एक जानकारी की तरह जो उसे बता रही है कि उसे कहां सुधार करना है। वह इस प्रोसेस में मजा लेगा। उसके लिए हर बिगड़ा हुआ मॉडल एक सीढ़ी है जो उसे बेहतर एनिमेटर बनने की तरफ ले जा रही है। यही है सबसे बड़ा फर्क। एक डरता है, दूसरा सीखता है। यह फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का खेल सिर्फ बच्चों की कहानियों या मैथ की पजल तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी असल जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, चाहे वो खेल का मैदान हो, स्कूल का क्लासरूम हो, हमारे रिश्ते हों या हमारा ऑफिस हो। हर जगह यह सोच तय करती है कि हम आगे बढ़ेंगे या एक ही जगह रुके रहेंगे। स्पोर्ट्स में देखिए, कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो नेचुरल टैलेंट के धनी होते हैं, लेकिन जब वे एक दो मैच हार जाते हैं तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। उन्हें लगता है कि उनका जादू खत्म हो गया है। वे प्रैक्टिस करना कम कर देते हैं और अपनी हार के लिए दूसरों को दोष देने लगते हैं। यह फिक्स्ड माइंडसेट है। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी हार को एक मौके की तरह देखते हैं। वे अपनी गलतियों का वीडियो एनालिसिस करते हैं, कोच से फीडबैक मांगते हैं और पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं। वे जानते हैं कि टैलेंट काफी नहीं है, लगातार प्रैक्टिस और सुधार ही उन्हें महान बनाएगा। स्कूल में भी यही होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे मुश्किल सब्जेक्ट से बचते हैं क्योंकि उन्हें फेल होने का डर होता है। वे सवाल पूछने में भी झिझकते हैं कि कहीं लोग उन्हें बेवकूफ न समझें। वे सिर्फ अच्छे ग्रेड लाने पर फोकस करते हैं, सीखने पर नहीं। जब उनके कम नंबर आते हैं तो वे टूट जाते हैं और खुद को कमजोर मान लेते हैं। रिश्तों में भी माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि रिश्ते या तो परफेक्ट होते हैं या खराब। वे मानते हैं कि अगर किसी रिश्ते में मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि वह रिश्ता उनके लिए सही नहीं है। जब कोई मतभेद होता है तो वे उसे सुलझाने की कोशिश करने के बजाय रिश्ता खत्म करने की सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पार्टनर को उन्हें बिना कहे ही समझ जाना चाहिए। वे बदलाव के लिए तैयार नहीं होते और अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। यह सोच रिश्तों को बोझ बना देती है और उन्हें टूटने की कगार पर ले आती है। इसके उलट ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि एक अच्छा रिश्ता बनाना पड़ है।
वह बना बनाया नहीं मिलता। वे जानते हैं कि दो अलग अलग इंसानों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है। वे कम्युनिकेशन पर काम करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं और मिलकर समस्याओं का हल निकालते हैं। वे अपनी गलतियों को मानते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एनिमेशन सीखने वाला एक स्टूडेंट अगर फिक्स्ड माइंडसेट का है तो वह दूसरों के शानदार काम को देखकर सोचेगा, मैं कभी ऐसा नहीं बना पाऊंगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचेगा, वाह, ये कितना कमाल का है, मुझे ये सीखना है कि ये कैसे बनाया गया। ये सोच ही उसे आगे ले जाएगी। History has shown us, again and again, that the greatest people in the world weren't always the most talented, but they were definitely the ones who worked the hardest. Take Thomas Edison, for example. He invented the light bulb, but before that, he failed more than 1,000 times. When someone asked him if he felt bad about failing so many times, he said, I have not failed. I've just found 1,000 ways that won't work. That's just a perfect example of a growth mindset. You know, someone with a fixed mindset might give up after just a couple of failures, thinking, maybe this just isn't for me. But for Edison, every failure was just another step towards learning something new. People often say that Mozart, the legendary composer, had God-gifted talent. But what they forget is that before he created his first masterpiece, he practiced for more than 10,000 hours. His talent didn't just fall from the sky. It was shaped by years of hard work, dedication, and, honestly, a ton of practice. And then there's Michael Jordan, the guy people call the god of basketball. He was actually cut from his school basketball team because they said he lacked talent. Someone with a fixed mindset might have just accepted defeat right there. But Jordan took it as a challenge. He practiced for hours every day, worked on his weaknesses, and eventually proved everyone wrong. And you know, the same thing applies in every field. When you start creating animations in Blender, it's easy to look at people making amazing stuff and think, wow, they're just artists. They've got some kind of magic. But what you don't see is the hard work behind the scenes. You don't see the countless hours they spent practicing, the number of tutorials they watched, or how many times they failed. Maybe they aren't more talented than you, but they sure have put in a lot more effort. The real secret to their success isn't just talent, it's their effort and their growth mindset. They believe they can get better with practice, so next time you see someone who's successful, don't just assume they're super lucky or naturally talented. Think about how much hard work they must have put in. There's something kind of magical about effort and hard work. It can make up for a lack of talent. People with a fixed mindset often think hard work is something to be ashamed of, like smart people shouldn't have to work hard. But folks with a growth mindset know that hard work is the bridge that connects ordinary to extraordinary. Your abilities really shine through your effort, just like coal turns into a diamond only after a lot of pressure and polishing. It's actually pretty simple. Relationships and teamwork, well, the journey from me to we really depends on having a growth mindset. It's not just about our own personal success, but about how we connect with others and work together as a team. Whether it's your office team, a sports team, or even your own family, the way you think impacts the whole group. Now, someone with a fixed mindset, they're always focused on themselves. They worry a lot about their own image. They want to take credit for team successes and are quick to blame others for mistakes. They see the achievements of team members almost as a threat to their own success. And honestly, they're just not comfortable giving or receiving feedback. This kind of me-first thinking can really spoil the team environment. It lowers trust among team members and creates a sense of competition instead of collaboration. Just imagine a team at an animation studio working on a project. If the team leader has a fixed mindset, he'll want all the good ideas to be his. He won't give junior artists a real chance to contribute because he's afraid they might outshine him, and if something goes wrong, he'll just blame a junior. In that kind of atmosphere, nobody can do their best work, and the team's output really suffers. On the other hand, someone with a growth mindset works with a sense of we. They understand that the team's success is their real success. Instead of trying to prove themselves, they focus on the team's goals. They want every member to grow. They know that everyone brings different skills and ideas to the table, and when everyone works together, the results are just so much better. They see mistakes as opportunities to learn, not as excuses to blame others. They give feedback openly and are always ready to accept feedback from others. A growth mindset team leader will give junior artists challenging tasks, knowing that's how they'll learn and improve.
They'll create an environment where people can share new ideas and ask questions without fear. And if a mistake happens, they'll say, let's see together what we can learn from this, so we don't make the same mistake next time. This we mindset builds respect, trust, and cooperation within the team. It's what turns an ordinary team into an extraordinary one. The same goes for relationships. When we move from thinking I'm right to how can we solve this problem together, our relationships get deeper and stronger. Children's minds are honestly like wet clay. They take the shape we give them. That's why, as parents and teachers, it's super important to help children develop a growth mindset from the very start. But how do we do that? Well, the biggest factor is actually how we praise them. Usually, when a child gets good grades or does something well, we say, wow, you're so smart, or you're so talented. Sure, it sounds nice, but unknowingly, this kind of praise can actually create a fixed mindset in kids. When we call a child smart or talented, we're praising their ability, not their effort. This makes them think they succeed because they're smart. Then they want to protect that smart image. They start avoiding difficult tasks. Because if they fail, they'll feel like they aren't smart anymore. They become afraid of making mistakes. So instead of praising ability, we should praise effort, hard work, persistence, and strategy. We should say things like, wow, you worked really hard to solve that problem. Or I really like the way you thought of different approaches. This kind of praise sends the message that success comes from effort and trying the right way, not just from being smart. It helps kids learn to embrace challenges. When they fail, they feel maybe they just need to try harder or find another way, instead of feeling defeated. Similarly, when we give feedback, we shouldn't say, you did this wrong. Instead, we should say, that was a good try. Let's see how we can make it even better. That encourages them to improve. It's also important to teach kids that the brain is like a muscle. Explain simple neuroscience. Whenever we learn something new or tackle a tough task, our brains actually form new connections and get stronger. Tell them stories of great people who succeeded through hard work, not just talent. And when your child is struggling to make an animation in Blender and feels discouraged, tell them, it's okay. Even the world's best animators didn't get it perfect the first time. Look how much better you did compared to last time. Your effort really shows. These little things help lay a strong foundation for a growth mindset in children. There's a really powerful and simple way to bring a growth mindset into your life, just by adding one little word to your language. That word is yet. It might seem small, but it can totally change the way you think. Whenever you catch yourself thinking, I can't do this, just say, I can't do this yet. If you feel, I don't understand this, try, I don't understand this yet. This tiny change shifts failure from being a permanent thing to a temporary one. It reminds you that you're on a journey, and while you haven't reached your destination, you're definitely on the road. The word yet gives your mind hope. It tells you that the path to learning is still open. It stops you from giving up and keeps you motivated to keep trying. Let's say you're trying to animate a complex character in Blender and it's just not working. A fixed mindset voice says, see, I told you this just isn't for you. Give up. That's a full stop. No way forward. But with a growth mindset you say I can't animate this character well, yet. That's like a comma, meaning the story isn't over. This yet mindset helps you focus on the process, not just the result. When you accept that you can't do something yet, your next question becomes, so what can I do to get there? Your attention shifts from the problem to the solution. You might think, maybe I need to watch a few more tutorials, or maybe I should break this process down into smaller steps, or maybe I should ask an experienced artist for advice. It pushes you to take action. It turns you from a passive victim into an active learner. Embracing the power of yet is actually pretty easy. You just need to be aware of your inner voice. When it says something negative, swap in that little word. Change. I'm not good at math to I'm not good at math. Yet. Change I can't speak in public to I can't speak in public yet. It's not just a word game. It's a way to reprogram your brain. It helps you believe that improvement is possible and that with effort and practice you can learn anything. It opens up a world of endless possibilities. Honestly, it's that simple. So, the big question now is, if your mindset is fixed, can you actually change it to a growth mindset? The answer is, yes, absolutely. Changing your mindset isn't something you do in a day, it's an ongoing journey, but it's totally possible.
The first step is to recognize your fixed mindset voice. Whenever you're facing a challenge, pay attention to what your mind is telling you. Is it saying, "Can you really do this? What if you fail?" Or, "This isn't your fault, the task is just too hard." Recognizing that voice is the very first step toward change. Once you notice that voice, the second step is to understand that you have a choice. You can believe that fixed mindset voice, or you can choose to answer it from a growth mindset perspective. When your mind says, "Don't give up," or "Everyone will think you're a loser," remind yourself, the real loser isn't the one who fails, but the one who doesn't even try. When your mind says, "This is too hard, just quit," answer back, "It's hard, and that's exactly why I'll learn something new by doing it." It's like having a conversation with your own mind, where you consciously choose the growth mindset. The third and most important step is to take action. Just thinking about it isn't enough. You have to act on your growth mindset. Embrace challenges, even if you feel scared. Pick the tasks you usually avoid, welcome mistakes, and try to learn from them. When you fail, analyze what went wrong and think about what you can do differently next time. Ask for feedback from others, and instead of taking it personally, see it as a gift for improvement. Set a goal to learn something new every day, no matter how small it is. This journey never really ends. All of us have a bit of fixed and a bit of growth mindset inside. Sometimes the fixed mindset takes over, especially when we're tired or stressed. The key is to stay aware and keep pushing ourselves toward a growth mindset. Remember, it's just like building a habit. The way you exercise daily to get fit, practicing a growth mindset every day makes your mind stronger. It's the best investment you can make in your own success. A journey that will keep making you better for the rest of your life. It really is that simple.